when endothermic reaction take place, की एमसीक्यूज में सबसे पहली बहुत जो आई है रिपीट, when endothermic place टेम्परेचर सराउंडिंग, तो भाई डिक्रीज हो जाएगा ना, से हीट आ जाएगी हमारे पास। कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड वाले में फॉर द रिएक्शन द चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड heat of neutralization. The net chemical reaction is same whether it is brought about in two or different ways or in one or several steps. It is known as Hess's law. The study of heat change in chemical reaction is called thermochemistry. A material which is under consideration is system. The units of heats are Curie and Joule. ये भी बहुत आई है एमसीक्यूज, ठीक है। नस के टेस्ट में 2-3 दफा आई है ऐसा, लेकिन बहुत आई है। फिर है most of the reaction which give stable product are so exothermic. The first law of thermodynamics is conservation of energy. फिर first law of thermodynamics relate heat, work and energy. Which of following equation is correct? तो del H equal to del E plus del W. क्वेश्चन ये यही होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेल्महोल्ट्ज ने जो दिया था, ठीक है। फिर है ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स है। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? पॉजिटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नहीं भाई। H is negative for energy, ऐसा भी नहीं होता। When work is done by the system, W is negative. Work done by the system होता है तो W पॉजिटिव होता है, तो इसमें तो ये मिस्टेक है। सो 14th वाले में फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा देखो, ये ना कुछ मखसूस है, अक्सर बच्चे इस पे हैरान होते हैं। देखो जैसा कि अब ये कंबस्शन रिएक्शन है, भी हाइड्रोकार्बन होगा और उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, तो ये हमेशा ना एक्सोथर्मिक होगा, रहेगा एक्सोथर्मिक। विच ऑफ फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक? इसकी भी पहचाने रखो। जब भी हाइड्रोजन और हेलोजन का तो सनलाइट चाहिए होती है, इसलिए एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। कुछ पहचाने जिनसे हम फौरन पहचान लेते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या, तो ऐसी पहचान है, तो इसके लिए परेशान होने। फिर रिप्रेजेंट चेंज इन एंथैल्पी। फिर कार्बन प्लस 2 सल्फर डेल H पॉजिटिव दिया है, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। इक्वेशन टू डेल H रिप्रेजेंट हीट चेंज टेम्परेचर। मैथमेटिक्स तो E इक्वल टू Q माइनस W, सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 कैलोरी एक्यूरेटली 4.1868 जूल्स होता है, और किलो कैलोरी है तो 4.18 किलो जूल्स हो जाएगा। न्यूमेरिकल में लेता हुआ हम 4.2 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। फिर है ऐसा ही इंफॉर्मेशन किलो जूल पर मोल। फिर है प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एक्सटेंसिव of system which are independent of are called intensive property. फिर example of property are surface tension, viscosity भी है, pressure density भी है, melting boiling point भी है, तो all of the above।
The chemical reaction which are accompanied by with the material change are generally known as thermochemical reaction. Now, system is microscopic, not extensive property temperature. It is matter to given a system divided into two. The value of extensive property will become half of the values. Del V equal to Q का change of enthalpy when of substance is formed when its element is called heat of formation. In decomposition, enthalpy of product is always greater than the enthalpy of reactant. Enthalpies of the standard states are zero. What happens to the enthalpy change when the coefficient are double? तो ये भी double हो जाएगी. फिर 35 है. Sum of heat and work will always be same. This first law of thermodynamics. फिर an example sealed solution in thermodynamics. The exchange of matter and energy both take place between the system and the surrounding. It is known as open system. If the temperature remains constant during each stage of the process, isothermal dynamics property depends on only. तो भाई कोई भी नहीं करती तो none of the above हो जाएगा. ओके भाई, ये हो गया हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का. ठीक है, 5 मिनट बाद हम सोल्यूशन की एमसीक्यूज करेंगे. किसकी? सोल्यूशन की एमसीक्यूज. ठीक है, इसको रिव्यू कर लें. 5 मिनट के बाद हम सोल्यूशन की एमसीक्यूज करते हैं.